Hello students and welcome back. In this video we are going to discuss about the chapter that we have done so far, and we're going to have a recap in this video. Let's have an overview of the chapter that was related to energy. So what is energy? Let's recall our memory. Energy is actually the ability to do work. ठीक है? क्या था energy में? Ability to do work. So humans use a food that is their source of energy. ठीक है, कोई भी मूवमेंट हमने करनी है, इट्स बिकॉज वी हैव एनर्जी इनसाइड अस, राइट? अगर हम मशीन्स की एग्जांपल लें तो गाड़ियां बहुत कॉमन एग्जांपल है। हमें गाड़ी में फ्यूल जैसे पेट्रोल डालना पड़ता है, और उससे क्या करती है गाड़ी, इट मूव्स अराउंड, right? It takes us from one place to another place, and it's all because of the energy that is created inside it. ठीक है, so we learned how the um, energy can be transferred from one source of energy to another। ठीक है, तो अगर हम ट्रांसफर होने का रिकॉल करें तो उसमें हमने एग्जांपल पढ़ी थी डैम की, राइट? तो डैम में वी यूज़ वाटर इन ऑर्डर टू ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्म इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके अलावा वी ऑल्सो लर्न अबाउट द विंड मिल, राइट? तो विंड मिल जो है वो विंड यूज़ करता है, विंड एनर्जी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसी तरह डैम भी वाटर एनर्जी यूज़ करता है इन ऑर्डर टू क्रिएट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, we studied about some common forms of energy. The first one we studied was heat energy। और heat energy क्या होती है? It's actually um, the energy in which um, it's actually a flow of energy in which the particles that are warmer, they transfer the energy to the particles that are colder, right? तो आप इसको कह सकते हैं it's the transfer of energy from warmer region to colder region। ठीक है, then we also studied about temperature, that is actually created when there is energy। जब आपके particles move करते हैं and it creates the energy due to the heat, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं और कौन सा measure यूज़ करते हैं? हम temperature का measure यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो we can how can we कैलकुलेट द टेम्परेचर, या हम किस चीज़ से मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर को? तो वी यूज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ कॉल्ड द thermometer। ठीक है, एंड वी ऑल्सो लर्न दैट द यूनिट फॉर measuring द हीट इज एक्चुअली joules। ठीक है, जिसको हम जे से भी डिनोट करते हैं। और थर्मामीटर में हमारे पास क्या क्या होता है? देयर इज़ अ सेल्सियस एंड देयर इज़ फ़ारेनहाइट, जिससे हम दोनों यूनिट्स को यूज़ करते हुए वी कैन कैलकुलेट वेदर द रीजन इज़ कोल्डर और वेदर द रीजन इज़ hot। Alright, we also studied about another type of एनर्जी दैट वाज लाइट एनर्जी। ठीक है, तो लाइट एनर्जी में क्या होता है कि लाइट एनर्जी की अगर आप एग्जांपल लें तो सन इज़ अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी इज़ एक्चुअली द ट्रांसफ़र ऑफ यू नो द रेज इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो रेज हैं वो आपके स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एंड इफ एनीथिंग्स कम इन बिटवीन द लाइट एनर्जी, यानी अगर किसी कोई चीज़ लाइट के दरमियान में आती है तो इट फॉर्म्स अ शैडो। हमने क्या पढ़ा था कि हाउ द शैडो इज फॉर्म? तो इट्स एक्चुअली फॉर्म बाय द ब्लॉकेज ऑफ लाइट। ठीक है, इसके अलावा वी ऑल्सो लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स in which we learn that there are some objects that create their own energy, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं luminous object। And there was another type of object जो कि they take the energy sorry the light energy from another object, that is called a non luminous objects।
ऑलराइट। इसमें हमने एग्जांपल पढ़ी थी सन की, इसमें हमने एग्जांपल पढ़ी थी मून की। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लाइट एनर्जी। इसके अलावा द थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी डिस्कस वाज साउंड एनर्जी एंड हाउ इज इट क्रिएटेड। Sound is actually created by the vibration that is caused in a सरफेस और या किसी भी चीज़ में किसी भी ऑब्जेक्ट में जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, ठीक है? तो उसकी वजह से साउंड क्रिएट होती है, राइट? वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन इज़ एक्चुअली द मूविंग ऑफ पार्टिकल्स बैक एंड फॉर्थ। तो उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं और जब वाइब्रेशन क्रिएट होती है तो साउंड क्रिएट होती है। हमने इसका पढ़ा था हाउ इज़ इट क्रिएटेड? इट्स एक्चुअली क्रिएटेड व्हेन द पार्टिकल्स इन द एयर आर एक्चुअली पुश्ड और उससे जो है साउंड क्रिएट होती है, ठीक है? वाइब्रेट होता है वो और पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, जो कि साउंड वेव क्रिएट करती है और दैट इज़ हाउ द साउंड इज़ क्रिएटेड। इसके अलावा वी लर्न अबाउट द साउंड्स दैट हैव हाई फ्रीक्वेंसी एंड द लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है? देयर आर सम साउंड दैट कैन ओनली बी हर्ड बाय some animals and we humans cannot hear it, ठीक है? क्योंकि वी हैव अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि हम सुन सकते हैं। इसके बाद वी आवर ears does not have the ability to hear those sounds, ठीक है? And then we learned about that sound can only travel and air में travel कर सकती है, it does not travel in a vacuum, ठीक है? Vacuum is a place where there is no air and there is nothing that carries the साउंड। तो इसमें ये ट्रैवल नहीं करती, एयर में इट डज ट्रैवल, ठीक है? देन वी स्टडीड दैट हाउ इज एको क्रिएटेड, ठीक है? तो एको कैसे क्रिएट होती है? एको इज एक्चुअली क्रिएटेड व्हेन देयर इज अ सरफेस और उस पे जाकर वो बाउंस बैक करती है साउंड साउंड वेव, तो उसकी वजह से क्या होता है? एको क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक एम्प्टी रूम है और इसमें खड़े होकर अगर आप बोलते हैं तो क्या होगी कि आपकी आवाज़ जो है दैट इज़ गोइंग टू बाउंस बैक फ्रॉम द वॉल्स टुवर्ड यू और इसकी वजह से आपको एको सुनाई देती है, ठीक है? Then we learned about a fourth form of energy, and that was electrical energy. We learned that it is actually created by the movement of particles. ठीक है? Moving particles or specifically electrons. Then we studied how the electric circuit helps the flow of um, electricity. ठीक है? और इसकी वजह से जो है वो फ्लो जो जिसकी वजह से हम सबको हमारे घरों में electricity provide होती है। Alright, so that was it with the chapter. I hope you guys have understood it. See you guys with the more videos about the new topics, inshallah.